So Kanishka, right? Yes, That's दीदी. your, yeah. तो अभी हमने आंचल और कनिष्का, आंचल का नाम कनिष्का भी है, okay? And what I heard, like we are working on your kidney issues because you are on dialysis for how many years? 2.5 years. 2.5 years. तो थोड़ा सा explain करो कि what exactly is the situation and how it happened. So, I was diagnosed with chronic kidney disease in 2014 or 15, and post that I was doing well with diet. But suddenly in 2019, I was put on dialysis, and kidney disease is something which hampers your urine, also your kidney conditions, also your diet also. So since like from past 1 year, I my urine output was almost zero, and I connected with Didi 1.5 years back, and we've been doing regular meditations, group meditations, one-on-one session with her. And last session we decided to do regular sessions, and we did our voice scan, and she started working on me, and she also gave me a beautiful name, Kanishka. And after last session, I actually observed there is an increase in the urine output, like earlier there was no urine at all, but now I'm happy to say that urine output is there. We are still working on our issue. So yes, Didi. Amazing. हाँ. Do you feel confident? Now I can. तो जो मैसेज है वो यही है कि अपने दिल में राम और कुछ नहीं, है ना? राम 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 राम, वो मतलब छूटना नहीं चाहिए, एक सांस के साथ भी छूटना नहीं चाहिए, हर सांस में राम अपने आप ही जो है वो रोशन होना ही है, ठीक है? ठीक है. यस. अपने लिए नहीं, सबके लिए ठीक होना है. सबके लिए ठीक होना है, संसार के लिए ठीक होना है. तो while I'm working on your brain, जो मेरा काम है इस समय, वो जब तुम्हारे हीलिंग कर रही हूँ, तो the message that what I would deliver to you is कि whenever you are going for dialysis, है ना, instead of feeling कि मैं ट्रैप हो रही हूँ, कब तक चलेगा, you need to just change the thought. Thank you the universe for providing me this support. क्रिएट तो हो गया था, है ना, लेकिन अगर ये सपोर्टिंग सिस्टम नहीं रहता था तो आई वुड नॉट हैव बीन अलाइव बाय दिस टाइम टू डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ और एनीबडी, राइट? तो उस जगह को ब्लेस करते जाओ, एवरीबडी, उनके लिए भगवान इनको बहुत खुशियां दो, है ना? मतलब वो पूरे टाइम वो बेचारे जो वहां पे काम करते हैं, है ना, जिसने वो लगाया, चाहे ये सोच करके लगाया होगा कि चलो इससे पैसा बनेगा, या जो भी सोचा होगा, या भला होगा, कुछ भी सोचा होगा, राइट? लेकिन तुमको उस जगह पे जाने का मौका मिला किसी के वजह से, मतलब भगवान ने वो क्रिएट किया कि तुमको सपोर्ट अपनी मिले, है ना? तो अब यूनिवर्स हर तरीके से तुमको सपोर्ट कर रहा है, तुमको डायलिसिस के लिए जगह मिल रही है, यू आर गेटिंग ऑल्सो स्पिरिचुअल हेल्प, एंड यू आर गेटिंग ऑल्सो योर बुद्धिस्ट चैंट्स एंड व्हाटएवर, राइट? People are talking to you, and you also started working, right? Yes. So with dialysis situation you can work, tired नहीं होता? I go alternate days for work and alternate days for dialysis, and thoda sa, but not that much. I like to balance, manage well. So in this situation, if you can get a job and that too it suits your situation, right? तो और कितने टाइम से हम साल भर से काम कर रहे, राइट? मुझे लगता है कि जब एनर्जेटिक अलाइनमेंट हो जाती है तो आपके लिए कायनात काम करना शुरू करता है, राइट? तो एनर्जी अलाइनमेंट
is very important in order to achieve your full potential. And wherever you are, you have to grow, and the ultimate goal is from being ordinary to extraordinary. So this situation is already not an ordinary situation, it's an extraordinary situation. So when you come out of it, you will be extraordinary for thousands, right? A source of inspiration. And that's what it is. So